Ha. Okay, so let me share my screen first. I hope my screen is visible. Yes, it is good. Yep. Okay, so hello everyone. Myself Adish Jain from Electrical Part 2, a member of Robotics Club at IIT. Today, I and Dhruv will accompany you with PyBullet and Control Algorithms. So, okay, let's start. First of all, I will give you a short intro on what exactly simulation is. So, simulation is just a virtual rendering of the real world where we can conduct experiments on a robot without having to build them in real life. Now, the second question is why we have to do simulate things when that can be done in real life. So there are many reasons. Like for example, if I have come up with an idea, then we can quickly check whether our idea is feasible, practical, and cost efficient. And if doesn't fulfill any of the criteria, then we can discard it easily. And hence, it saved a lot of time and money. Yeah, of course. So there are many simulation softwares, like I've written here, VBots, PyBullet, Mujuko, etc. So, but we will be starting a journey with PyBullet. So let me introduce you to PyBullet. PyBullet is actually a Python module for physics simulation and robotics. In this workshop, we'll be using the simulation software for almost all the time. Now, there are many questions like it may arise in your mind, like why have I given preference to PyBullet over other simulation softwares? Then, well, the answer is pretty obvious. It is because PyBullet is a Python module, right? And it is considered that Python is a very beginner-friendly language. So that's why we are using PyBullet. And one more thing, PyBullet is an open source software. And it has an active community with us. So you can just Google your doubts, and it will be cleared easily. So now we move on to basic structure of our robot. As we'll be working with robots for most of the time, actually not most of the time, almost all the time. So it would be beneficial to know the basic structure of the robot. So the robot is a combination of rigid bodies and joints. The rigid bodies are known as links and the joints are known by their name only. And the links are interconnected by means of different types of joints. So in links, particularly a base link, we have a base link. So this is the primary link to which all the other links are joined directly or indirectly. For example, in this picture, which I've uploaded in the right hand side, this is a basic structure of a bot, and link 1 is the base link. Now, before hopping over the parent link as well as child link, let's first see about joints. So, let us first see the definition. So, any form of motion causing interlinkages are called joints. So, in layman language, we can say that any two links are joined with, sorry, I will speak again. Any two links are joined with the help of joints. For example, link 1 and link 2 are connected to each other with the help of joint 1. And with respect to each joint, we have a parent link and a child link. So in this case, the parent link is link 1 and child link will be link 2. And link 2 is connected to link 1. That's why link 2 is child link with respect to joint 1. And not the other way around. Like we can't say like link 1 is connected to link 2 via joint 1. We can only say that link 2 is connected to link 1 via joint 1. And you can also see these arrows which is depicted in this picture. So it depicts the parent link as well as child link. For example, for joint 2, the arrow is pointed in this direction, which tells that link 1 is the parent link and link 3 is the child link. This is with respect to joint 2. Similarly, with respect to joint 3, we can say that link 4 is child link and link 3 is parent link. So now we have 6 different types of joint based on the range of motion it permits. For most of the time in this workshop, we will be using prismatic joint and revolved joint. Prismatic joint, prismatic joint allows translation motion in one dimension, whereas revolved joint allows rotation motion in one direction. Revolved joint is quite common. Prismatic joint you can consider as a matchbox. Like if you open the matchbox, then that type of joint is known as prismatic joint. Now comes the URDF file. So URDF file stands for Unified Robotic Description Format, is a file that includes how a robot is gonna look.
Like it contains all the information regarding the links and which type of joint the links are connected to each other, their color, their mass, their initial properties, and many more, even their geometry, like it if it is a cube, a cuboid, a square, or anything. Also, each and every object that we have loaded in the simulation has an URDF file, whether it is a box, a simple plane, or anything else. Like there's a notion that only robots have a URDF file. That's wrong. Even any obstacle will also have a URDF file. Now that's sufficient theory, I guess, and I have to ensure that you guys don't sleep. So let's jump to the fun part. That is the simulation. Okay, so this will be our starter code for the PyBullet, and you will see this code on in almost all the simulations in the workshop. So let me explain you the code line by line. Firstly, as we know that PyBullet is a Python module, we need to import it in order to use all its function. So we have imported PyBullet as P in our code. Also, we have imported time. Am I audible? Hello. Yes, sir. Okay, Yes. perfect. Then we Yes, have sir. imported time, which is you to step the simulation by a particular time in the code, and we will use this at later stage in the code. Here I have used. I will explain it properly. No worries. Then we have imported PyBullet. Now, what does this do? It actually it takes the inbuilt data of the PyBullet libraries. I will explain it later again. Next, we have this function, this one. Actually, in order to do our simulation, we have to connect it with a client. So we have connected this with a client with the help of this code, p.connect p.gui. And I mean this connects with the graphical user interface, and thus we are connected with the physics engine. Then we have this function. It registers the directory so that we can use the all the files that we have imported using the PyBullet data. For example, there's a function which is load URDF. The parameter of this function is a path to the URDF files. I've already explained the URDF files here, that which contains all the information regarding the bot. So in order to pass this URDF file as an input, that URDF file must be present in the directory somewhere. Like for example, I've used this URDF file, but this URDF file is not present anywhere in this directory. So this URDF file is taken directly from this PyBullet data, which I've already imported. And this load URDF function returns an unique ID, which is present for each and every object which we have rendered in the simulation environment. So this was a quick intro of the load URDF function and what this PyBullet data and set additional search path functions do. I hope I am clear. And yeah, one more thing Yeah, that in that say in that within that means within that quotation, what you have written is a file name. yep, it's actually a file name. Like I have this dabba.urdf file. Similarly, I have a URDF file of plain.urdf, and this file is already included in the inbuilt library of Python, like PyBullet. Okay, okay. Means if we have any such thing, we have to include it in the inbuilt library. Actually, plain.urdf just provide a ground to the simulation environment. I Okay, will okay, run the environment, then it would be clear to you. okay, Don't worry. okay. Then Just next we have one thing, prefer asking doubts in the chat. And if you think your doubt cannot be solved through chat, first raise your hand and then you can go ahead and unmute yourself when we ask you to. That will be a yep. better way. Actually, भैया we'll be can having you a zoom in Q&A a little session at bit? last also, so you can Yeah. ask your doubts there भैया also. can you भैया can you zoom in a little bit? Sure. Give me a sec. Yeah, control plus should be the shortcut for that, I guess. Yep. It's visible right now. Can we time as t as we have PyBullet as p? Please pardon. Can we import time as t as we Yeah, have? yeah, sure. I have input. Actually, time we have only used once, so that's why I haven't imported. You can, sure. Okay, so moving on to the code, we have set gravity function. As the name suggests, it sets the gravity of this simulation. Also in my directory, I have a URDF file which I've already told, named as dabba.urdf.
So like it's a box. Let's standard it in our simulation. This is the code for it. In order to load it in a simulation, I have to give it a position as well as an orientation for the spawning purpose. Hence, I have given the spawn position in the 3D coordinate system, that is 0, 0, 1, so that the center of mass of the object will lie on this point. And also I have given the orientation in Euler angles. Now you must be thinking that what is Euler angles? So I will just give a short intro. Euler angle is actually the angle between the planes in which the object is located and the plane containing x-axis, y-axis, and z-axis. And this angle is in radians, like this is 0 radian, 0 radian, 0 radian. And this is the coordinates which I've inputted like normal coordinate axis. So currently I am, let's spawn at point 0, 0, 1. And I have set gravity normal, which is minus 10. Let's consider this. And one more thing, load URDF function, that orientation must be in quaternion angles. Quaternion angles is actually a bit hard. So just consider that PyBullet has an inbuilt function to convert Euler angles into quaternion angles. So I have used that function. Now let us run the simulation. Okay, so this is the simulation. So it was spawned at this point 0, 0, 1. Red one is the x-axis, green one is the y-axis, and sorry, let me do once again. Yep, red one is x-axis, green one is y-axis, and blue one is z-axis. So it was spawned at this point. Then due to the gravity, it fell down. So if I remove gravity, then it would spawn at this point and would remain here only. So I can check that also. Yep, it is there. So now you must be thinking one like important function which I left was this one. Like till here we have loaded all our URDF's file and all our environment stuff. Now this one is a little important. Just listen this one. So we have to run this simulation. So to simulate each step, we have step simulation function. Okay. So here we simulate for 10,000 steps and with the help of for loop, obviously. And between each step, we are adding a delay of 2/40th part of a second. So this was a code. And at last, after going through this for code, our physics engine will be disconnected with the help of this command. So this was my starter code type, and we can load different URDFs file. Like for example, if I want to spawn a real bot, like this was just a box, like a cuboid I already told. So if I want to spawn this bot, then this would be bot. And I have spawned it at point 2, 0, 0.1. Point 1 is just for the sake of error. So you can just play with the code. Like I can spawn it at a random point like 2, 2. Yep, so it's spawned here like x-axis, y-axis 2, 2. So this was the basic stuff, like how to spawn bot and all that stuff. So now we have spawned the bot. We have learned about URDFs. Now comes the control part. Like if you want to control the Yeah, bot. Adesh, can you just change the orientation of the uh, car once and show them like what Euler angles basically are, and just like change its yaw and just show them like it's just the rotation about z-axis. Yeah, sure. Just a sec. Maybe bhaiya, I can show it at last. Like I will. Okay. Yeah, cool. Bhaiya, can we simulate air drag and friction too? Yep, we can. Okay. Okay, so now we'll be moving on to the control part. Uh, okay, so controlling a bot. Now in order to control a bot, like I've already told that there were joints between the links. So we have to drive the joints, and each joint of a robot is motorized. That is, there is a motor attached at every joint.
And as we know that motors are the machine that induce some form of motion by creating torque in case of rotational motors, that would be in case of revolute joint, and a force in case of a linear motor, that would be in case of pessimistic joint. And as I already told you that joint by default has a motor, and we just need to give the motor a desired value like a position or maybe a velocity. So like that we can just control the motion of the bot. So that was from my side, and we can take the doubts in the last, I guess. Now I would like to invite Dhruv to enlighten you guys about how to control a robot. Yeah, hello. Am I audible? Hello? हाँ yes भैया. Yes, yep. Okay. Okay. So yeah, I will just share my slides. Just a second. So yeah, thank you, Adish. Now I am Dhruv Agarwal from Electronics Part 2, and I will be taking you into the world of differential drive and PID control. So I will just start by summarizing differential drive. So like it is the simplest control method for a robot. Like you will see it in a minute. So let's start. Okay, so let us start to understand differential drive using a two-wheeled robot. The two wheels are independently driven and are on the opposite sides of the robot. In this control method, the turning radius of the robot is determined by the speed difference between the two wheels, thus giving it a name differential drive. And in case of a four-wheeled robot, the principle basically remains the same. The two wheels on the same side are always given the same velocity. So differential drives allows us to move the bot in any direction. Let us see this through a few different cases. So I have a demo here from PyBullet of ASCII robot. I have implemented differential drive on it. So yeah, let us start. So now let us consider the case where we want our robot to move forward. Giving both the wheels the same velocity in the forward direction will make the robot move forward. Yeah, so this is pretty simple. And the same approach can be used to reverse the bot. Both the wheels of the bot should be given the same velocity in backward direction. So yeah, pretty nice and sweet, simple. Now let us consider a case where I want my robot to turn left. We can imagine that our bot is moving on an arc of a circle and is moving in counterclockwise direction. The center of this circle will be on the left hand side. Thus, if we want to continue moving on this circle, the inner wheel, which in this case is the left wheel, should have a less speed than the right wheel. So yeah, you can easily check it yourself by considering a constant angular velocity and multiplying it by two different radiuses for each wheel. Now, similarly, for making a right turn, the inner wheel, which in this case is the right wheel, should have a less speed than the left wheel. Differential drive also allows for a very interesting feature in our bot. Our bot can actually spin about its own axis. Now, this is something that our cars cannot do. So, like, how can we achieve this? Giving both the wheels the same velocity in opposite direction cancels out the translational force, and our bot starts to rotate about its own axis. This code will be shared with you, and you can try changing the speed of both the wheels and see how the speed difference between the wheels affect the size of the turn. Like I have changed, and here you can see, just a second. Yeah. So now my bot is taking a bigger turn as compared to earlier. So basically this was all about differential drive. Now let's move on to PID control. Yeah, we have some doubts, Dhruv. So Yes, Pratik, you can go ahead and ask your doubt. Yes, Priya, that differential is used in means automobiles, no, for changing the velocity. So is it the same thing or different? For taking turns, right? It is the same, I guess. For taking turns, differential is used in real world cars also. Yeah, it is a slight difference. Like in real world cars, we have our two wheels in front that give most of the direction, and we have a differential. You are right, but this is a very simple version of that. Okay. So means in this also boat also we have to use a differential to change the velocities, no?
Yes, like in this bot that you will control inside PyBullet, you don't have rotation in your wheels. So you can't rotate your wheels like you do in a real car. So only option that enables you to turn is using this differential drive. So you can say you can move your wheel, rotate your wheel, but you can't change their direction. You can't change their axis. So in real world cars, most common cars, you change the wheel axis of your wheels. You rotate them left or right, and your car turns that way. That is not differential drive. So some cars uses 4x for transmission. Those are able to do differential drive. Differential drive is just your axis of the motors is constant. They are rigid, and either you rotate your motors in clockwise or anti-clockwise. So when your both motors are rotating clockwise, it moves forward. Anti-clockwise, both are rotating, it's move backwards. And if you make a slight velocity difference between them, then your car starts to drift, and that drift is just which allows it to turn. Okay. Yeah, G Harisundan, if you have any doubt, go ahead. Yeah, you are using OpenCV interpreter, Honda OpenCV interpreter. Your voice is not clear. Can you repeat? Now clear? Now it is clear, Bhaiya. Yeah, it is better. Bhaiya, you are using OpenCV interpreter in Uh, Visual Studio Code. we are using Python basically. OpenCV is a library of it. Right now we are not using OpenCV. Okay, okay, Bhaiya. Yeah, this GI window that you are seeing, all the visuals are automatically generated by PyBullet, so no need for OpenCV in this. Yeah. Okay, Bhaiya. So yeah, so let's move on to PID controller. Okay, just one more doubt, I guess someone has. Dhruv? Yes. हाँ हाँ भैया, ये ना इस कोड को VS कोड में सेटअप कैसे करना है वो नहीं पता मुझे। ज़रूरी नहीं है, लाइक अभी चैट पे ही बताया था मैंने, दिस इज़ फॉर एवरीवन. यू डोंट नीड VS Code to run this code. VS Code is just an editor that we are using for the tutorial. You can simply, as per your previous tutorials, you can simply write your Python code in a notepad file, save it with .py extension and run it using prompt. You don't need specially VS Code for this. This is just like editor भैया that we are using. पर भैया आप प्रोवाइड करा सकते हो, मतलब इसमें फिजिबिलिटी है ना इसमें डायरेक्ट रन की, इसलिए। हाँ हाँ, लाइक हम इंस्टॉलेशन लिंक्स दे देंगे, लाइक सिंपल होता है, तुम VS कोड सर्च करोगे गूगल पे और इंस्टॉल कर लोगे, वैसा ही होता है। बट अगर कुछ तुम्हें चाहिए तो हम लिंक्स भी प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप वगैरह पे। हाँ भैया, ये कर देना। भैया ये सिंपल पाइथन नहीं लग रही, मतलब ये पाइपलेट कुछ अलग है क्या पाइथन से? जब पाइथन में देख बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, सो देर आर मल्टीपल लाइब्रेरीज and Python that allows for using many features, so you don't find there's like a range of libraries, so for every purpose there is a separate library. Python is just a base language, so that way that is Yes one of भैया। the reasons we prefer using Python, because it has support for a lot of additional things. So you can like think of it as that it is just an additional module to the Python that allows you to do some additional things like add on. So you can just import this library into your Python. The syntax of the code remains same, and it does everything in the background. So simulation and everything is running in the background. You just need to call it and run it using Python. So Python is just an interface between this PyBullet and your commands. You are giving command through Python, and it is transferring them to this simulation, and it is doing some things at the background. So this simulation is a completely different thing. We call it PyBullet Then because भैया the interface is done you through will Python. then भैया you will provide the tutorial of पाइपलेट ना? Yeah, like we uploaded a video on how to install PyBullet and set it up, so you can look into it. ओके भैया। Okay. So yeah, I guess let's move on. We'll take the other doubts afterwards because we are short on time. Yeah, Dhruv, let's continue. Yes, I have. So yeah. So PID controller. It is one of the most simple, efficient, and effective feedback controller. Now the questions comes to mind, like what is a feedback controller? So okay, let us consider an example of a quad rotor drone. Here, the system that we want to control is obviously the drone.
Now, the input that the drone takes is an upward force, which is achieved by changing the propeller speed. And we can see in the output in the form of the height that the drone is at. Now, basically, we want a control system that can generate an appropriate input signal, that is the upthrust, so that we get the desired output. That is, in this case, the height at which we want our drone to be at. Here, in a feedback control system, the output is fed back and then it is compared with the desired output to see how far off we are from where we want to be. The difference between the current height and the desired height is the error term. Now, when we have reached the desired height, the error term will become 0. So basically, we want an algorithm that can convert our error term into a suitable input, in our case, which would be an upward force. And over time, the error will reduce, and over time, it will make the error 0 so that our drone achieves the required height. This algorithm is called a controller. So like error is a very important like concept in this PID. So let us make sure that we understand it completely. So here is a simple example. In our case, error is the current height minus the desired height. Let us consider a case where our current height is 1 meter and our desired height is 3 meter. So in our case, the error will be 1 minus 3, that is minus 2 meters. One more thing that I want to add is that error can be negative, positive, and 0. What I mean to say by this is that always consider the sign with the error. Okay, so now the task at hand is to find a method that our error term becomes 0. For this, let us consider a simple formula. Now, wouldn't it be nice if the upward force is proportional to our error? The further below we will be from our desired height, the more should be our upward force so that we reach the destination as fast as possible. Let the constant of proportionality be Kp. And thus, the larger the value of Kp, the faster will be our approach towards the desired height. Here is a demo video to show you this method. Yeah, so this is a very good baseline, but as you can see in the video itself, that this won't be enough to make our drone stable at a desired height. So like what is happening here? Let us consider our desired height to be 3 meters. Okay, so initially the error term is large and therefore our drone have a large upward force and thus it is accelerating. Now as it approaches the 3 meter mark, the acceleration on it will slowly decrease to 0. But over time, it would have gained a large velocity and it overshoots the 3 meter mark. And then a downward force starts acting on it. Soon the velocity decreases and it starts to descend. This time on reaching the 3 meter mark, it is still not able to stop because of the large downward velocity. And this keeps on repeating and repeating and repeating. So like something is missing here, something that might be able to help our drone apply brakes, something that can tell our drone that okay, you are approaching the destination, you should start to reduce your velocity. This is where we start considering for another parameter which can tell our drone that you are moving too fast. So how can we tell our drone that it is moving too fast? Like simple, we can check for the difference between two consecutive errors, that is the error minus the previous error. So you can see if we have a very large velocity, the difference will also be greater. So like here we are penalizing it for moving too fast. The faster it moves, the larger will be its penalty. Okay, so let the constant of proportionality be Kd. Adding this to our original formula will give us this expression. Initially, our proportional term will be dominant as we are far away from the target value and our speed of approach will be very less. Eventually, as we are approaching the desired height, our derivative term will gain the dominance. This Kd into error minus previous error is called the derivative term. And it will start reducing the speed of approach to the 3 meter mark. Let's see this in the demo video. So like, wow, it has really stopped our drone at the desired height. But like, what is now going on here? Like, why has our drone achieved a steady state at a lower height?
In this particular case, we can have an external factor that is imposing an unwanted force on a drone. If you guessed gravity, then you are correct. So we can argue that adding a constant term might resolve a problem. But in real world situation, this external factor can be anything. Like for example, it may be a strong wind, and there might not be any way that we could include it in our formula in the form of a constant. So can anything be done in order to resolve this? So here we bring the integral term into the picture. So what is this integral term? It will be the sum of all the steady state error up to this point. Adding this term to our existing formula will with the proportionally constant ki will get us this equation. Now what exactly are we doing here, and what is a steady state error? So basically a steady state error is an error when a drone is stuck at a steady state, like it is at the same height, and it is not changing its height much with time. Summing up this error will be equivalent to telling the drone that it has been too much on one side of the desired height, and that it must move towards the desired height, which is 3 meters in our case. Eventually this will sum up and counter the external force, and the drone will have achieved the desired height. So let us see the demo. So yeah, it has achieved the desired height like in the previous case. It starts to fall down, and it was achieving a steady state, but because of the integral term in this particular demonstration, we were able to finally achieve the desired height. So yeah, finally we have managed a control system that can give appropriate commands to a drone so that it achieves the desired height. Yeah. The code for this simulation will also be shared with you, and you can adjust the value of KP, KD, and KI and see how each of these affects the drone. Yes, finally. So, okay, we have our PID, the proportional integral, and the derivative. So the proportional term is telling us about the present error. It tries to get the drone to the destination as fast as possible. The integral term is summing up the past error, and it helps in overcoming the external factors and maintain a desired state. The derivative term is trying to reduce the future error. It restrains the drone from moving too fast. The graph shown here is showing the individual contributions of each term. Like for example, the contribution of the proportional term is same as the error curve. The contribution of the integral term will be same as the pink curve, will be the pink curve, and the contribution of the derivative term is shown by the blue curve. So like one thing to note here is that in this particular graph, we are summing up all the error and not just the steady state error for the integral term. So this is chosen based on the problem, and both of these methods can be used. Our PID controller is now ready. The contributions of each of these terms can be adjusted by changing the values of KP, KI, and KD, which are also known as the gains. Like KP is known as the proportional gain, KI is known as the integral gain, and KD is known as the derivative gain. So by finding the optimum value of these gains is called tuning the controller. By optimal gain, I mean the configuration of KP, KD, and KI through which our drone is able to achieve its desired height the fastest. If the value of any of the gains is 0, then the controller is referred to by the letters of the non-zero terms. For example, if I put KI is equal to 0, then we will only have the proportional and derivative term. Thus, it will be called a PD controller. But why would we ever want to set any of the gains 0 and not use a complete PID controller? A simple controller will be easy to implement, and it would be easier to test, tune, and troubleshoot. If a problem can be solved by a simple controller, then it would be better to try it first and then work on its shortcomings. So like a PID controller finds its application in a variety of problems. This is a line following bot made by me and my friend. It
is a two-wheel bot which uses differential drive to move. It is using a PID controller, and yeah, let me show you a demonstration. Like we are calibrating, and yeah, you can clearly see my Yeah, excitement I when we want to were able say to something. tune this PID for the near optimum value. Yeah, Yeah, so thank you. That was all about PID and differential drive. Yeah. So now we can open up for the questions. yeah. Yeah. Am I audible? Yeah, you're audible. So means I was unable to see the videos after some time. Not the previous video I was completely unable to see, but before that, that control one also I was unable to see. So Yeah. was it a problem? Okay. Uh, It was Yes, sir, not the a animation problem on was your not side, I guess. working. I mean, was it? Oh, okay. So, Like okay. it was fine for me. I guess it's a problem on your side of probably Maybe network connection issue. issues. We have recorded the meeting. You can just look at the video afterwards again to see the Yeah. Okay. videos. And we will also share the slides, PPT. So yeah, you can go through it. भैया हम हाउ ये टू पूछ सकते हैं क्या? भैया जो आपने कोड लिखा था उसको हम कैसे लिखेंगे? उसके लिए कोई ट्यूटोरियल करना पड़ेगा क्या? Just one by one, you can raise your hands and ask your doubts one by one. We will like ask names. So yeah, Lalit, भैया जो आपने कोड लिखा था स्टार्टिंग में उसको मतलब लिखने के लिए अपना कौन सा ट्यूटोरियल करना पड़ेगा? आदिश शायद वही मतलब या जो इनिशियल कोड था स्टार्टर कोड PID code or starter code? स्टार्टर कोड Starter code, I think I have VS explained code. well. And yeah, one more doubt, one more thing. Like Raghav Bhaiya, you acknowledged one doubt. Can you repeat that? Maybe I can show now as the slides are over. yeah, we can take it after the questions, I guess. So Okay. we'll share that text file with you, Lalit, and you can refer to that. And we'll also share the whole guide of PyBullet with you, all the commands that are used in PyBullet with you. You can play with them, experiment with them, and learn that yourself. And if you have any doubt, your mentors are there to solve those ओके doubts. भैया. या हम ये कब Yeah, तक Niharika. Okay, let's go one by one, I guess. Niharika is on the top. Yeah. Okay, Naman. You can unmute and ask your doubts. Who have raised your hands, Naman? Yeah, am I audible? yes. Yes. So भैया फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आप जैसे वो कीबोर्ड यूज कर रहे थे तो मतलब कि हम जैसे कि कोड लिख के डायरेक्टली रन करते हैं उससे हम लोग को एनिमेशन दिखेगा कि कीबोर्ड से हम लोग को यूज करना होगा? मैंने पर्टिकुलरली कीबोर्ड इसलिए शो करा था ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं कौन सी की यूज कर रहा हूं. पर इसके अंदर जैसे पाइबुलेट के अंदर तुम देखोगे तो फंक्शंस होते हैं जैसे तुम कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हो. तो एक बार जब तुमने कोड रन करोगे और फिर तुम अपना कीबोर्ड यूज कर सकते हो पोर्ट को मूव करने के लिए. अच्छा वो मतलब की हाँ फंक्शंस हैं उसके लिए भी. और ज़रूरी नहीं है लाइक अगर तुम ऑटोमेट करोगे कोड को तो ऑटोमेटिकली भी चल सकता है. ऐसे इनपुट देने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है. हम वही यूज़ करेंगे अपने कॉम्पिटिशन में. तुम्हें कीबोर्ड से कोई इनपुट नहीं देना होगा. सब कुछ ऑटोनोमसली होगा. हाँ तो जैसे वो ड्रोन वाला जो वीडियो था वो पूरा ऑटोनोमस था. उसके अंदर कोई इनपुट नहीं दिया था मैंने. और भैया अगर हम लोग को कुछ अभी जैसे आप लोग शेयर करेंगे यहाँ जो मटेरियल हम लोग को दिया गया और कुछ उसमें हम लोग को पूछना रहता है तो हम लोग फिर कैसे पूछे? क्योंकि इसका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है रोबोटिक्स का इसलिए. कॉमन ग्रुप है Discord और टेलीग्राम पे. Telegram पे है I guess. हाँ, वही. ओके और वरना तुम्हारी जो भी टीम्स रजिस्टर कर चुके हैं सबको इंडिविजुअल मेंटर्स अलॉट हो रहे होंगे. तुम अपने मेंटर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हो. ओके थैंक यू. या ध्रुव. हाँ हम ये कब तक बनाना सीख जाएंगे? मतलब हमें प्रोजेक्ट बनाने रहेंगे क्या? तुम बहुत कुछ कॉम्पिटिशन्स के थ्रू सीखोगे. जैसे अभी जो ये कॉम्पिटिशन हो रहा है तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और बेसिकली जितना तुम पार्टिसिपेट करोगे ना तो तुम ट्राई कर करके और बेटर होते रहोगे. मतलब ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. कंपटीशन में भैया हमें खुद बनाना पड़ेगा या कोड करना पड़ेगा? मतलब क्या क्या होगा कंपटीशन का? सिमुलेशन होगी. मतलब कोड ही करना होगा. अच्छा शुरू में तो लाइक रोबोटिक क्लब जितने भी
कंपटीशन कराएगा उन सब में मेंटर अलॉट हो गए, सो उससे काफ़ी लर्निंग होती है। ओके भैया। अभी ऑनलाइन है, मतलब ऑफलाइन में तुम टीम्स में काम मिलकर नहीं कर सकते ऑफलाइन की तरह। ऑनलाइन में तुम इंडिविजुअल लाइक कैसे ओवर वीडियो कॉल एंड ऑल तो कोलैबोरेट कर लोगे, बट हार्डवेयर में कोलैबोरेट नहीं कर सकते। तो होपफुली अगर जल्दी ऑफलाइन होता है तो एक हार्डवेयर इवेंट भी करवाएंगे, बट दिस इवेंट विल फोकस ऑन सिमुलेशन ओनली। ये हाई एंड पीसी चाहिए क्या इसके लिए? अभी मेरे नहीं पास लाइक 4 GB एनी रैम है। एनी हाँ 4 GB विल सफाइस, नो इश्यूज। और एसएसडी वैसे है नहीं इसमें तो। हाँ कोई इशू नहीं है, एसएसडी नहीं है, ऑनबोर्ड ग्राफिक्स हो वो तो होंगे ही ऑब्वियसली, एंड 4 GB हाँ रैम, 3 GB रैम एंड i3 एंड upper that will work, no issues. Yeah, next we have Hemant. पटेल हाँ भैया, मेरी वॉइस ऑडिबल है? भैया यस। हाँ भैया, आपने वो ड्रोन उड़ाया था ना भैया, उसमें एरर कितना % आ सकता है हमें? कितना परसेंट मतलब किस जो फाइनल एरर है, मतलब जो वो पूरा स्टेबल हो चुका है? हाँ उसमें। मतलब वो तुम्हारी ट्यूनिंग पे डिपेंड करेगा। जैसे अभी भी जो मैंने लास्ट में वीडियो दिखाया था उसके अंदर वो लाइक 3 मेरी डिजायर्ड स्टेट थी, तो वो 3.001 और 2 मतलब 99 समथिंग के बीच में वेरी कर रहा था। पर अगर वो परफेक्टली ट्यून हो जाएगा तो फिर कोई एरर मतलब जरूरी नहीं है, मतलब इट कैन बी एट मतलब बहुत माइन्यूट, मतलब नेग्लिजिबल ही होगा, इग्नोर कर सकते हो फिर। अच्छा, और आपने एक और बताया था उसमें हमें डिजायर्ड हाइट 3 मीटर था पर करंट हाइट हमें 1 मीटर आया था। हाँ मतलब वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है, मतलब 2 हाँ। मीटर से 200% हो गया अप्रॉक्सीमेटली। मतलब इतना ज़्यादा एरर क्यों आया था? नहीं वो एरर मैं तो ये कह रहा हूँ कि ड्रोन इनिशियली ग्राउंड पे है, ठीक है, हाँ तो मान लो 0 मीटर पे है और वो उसको 3 मीटर पे जाना है, तो हर एक पॉइंट पे एक एरर होगा। तो हाँ अभी जो हम एरर कह रहे हैं वो हो जाएगा तुम्हारा 0-3, जो कि हो जाएगा -3 मीटर्स, है ना, मतलब ये हाँ। कन्वेंशन के हिसाब से हो जाएगा। पर मतलब तो ये एरर हर पॉइंट पे होगा और हमारा जो कंट्रोलर है उसका काम होगा कि एरर को मिनिमाइज करना है। तो अच्छा, तो फिर हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारा एरर घटता जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, बस यही पर्पज है कंट्रोलर का हमारा कि एरर को कम कर दो। अच्छा, और हम ये पाइबुलेट कब तक सीख जाएंगे बनाना थोड़ा? सीखने के लिए तो प्रैक्टिस ही है, मतलब पाइबुलेट का तो तुम हाँ अभी यूज़र वो बेसिक तो जितने भी कमांड्स हैं उसका एक डॉक्यूमेंट है वो शेयर कर देंगे और उसी के थ्रू सीख लेना मतलब। हमें यहाँ पर पाइबुलेट मतलब कोडिंग भी सिखाया जाएगा पाइबुलेट का? कोडिंग ऐसे है नहीं यार, कुछ फंक्शंस हैं उसके जो डायरेक्टली कॉल करने होते हैं, वो जितने नेसेसरी होंगे हम वर्कशॉप्स के साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो मैं फिलहाल अपना पाइथन इंस्टॉल करके रखना है, पाइबुलेट इंस्टॉल करके रखना है, उसकी गाइड हम ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुके हैं। और ये बेसिक जो कोड आज इन्होंने दिखाया है ये भी हम ऐसे गिटहब पे डाल के तुम्हारे साथ शेयर कर देंगे, तुम उसको रन करके देख सकते हो, उनमें कमांड्स वगैरह चेंज करके देख सकते हो। जो मेन कमांड है जो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी वो हम सब तुम्हें पहले से बता देंगे कि अगर तुम्हें कार को मूव करना है तो ये कमांड्स होता है, तो तुम उनके साथ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। जैसा तुम्हें चाहिए होगा, ज़्यादा कमांड नहीं चाहिए होंगे पाइवलेट के, मुश्किल से 4-5 कमांड ही लगेंगे तुम्हारे, और वो 4-5 कमांड हम ऑलरेडी तुम्हें बता देंगे क्या कमांड होता है, उससे क्या होता है एंड ऑल, तो उसकी टेंशन मत लो तुम बिल्कुल। हाँ, तो हम इनबिल्ट कोड यूज़ कर रहे हैं। हाँ इनबिल्ट कोड होगा सारा और तुम्हें प्रोवाइडेड होगा, तुम्हें बस उसको ऐसे मान लो कि ट्यून करना होगा, सही जगह पे यूज़ करना होगा। जो फंक्शंस होंगे हम बता देंगे कि कैसे यूज़ करना है। भैया बस फंक्शन में वेरिएबल्स की वैल्यूज हमें सेट करनी होंगी ना, लाइक थोड़ा बहुत ट्यून करके, और हमें जो उससे करवाना है रोबोट से सिमुलेशन में वो सब हम खुद न्यूमेरिकल मतलब वैल्यू असाइन करेंगे तो उससे वो सिमुलेट होगा। राइट। और अगर ये कोड सेम अगर हम मान लीजिए उसमें क्या कहते हैं अगर हम रियल फिजिकल रोबोट में जैसे क्या होता है ऑर्डिनो होता है और रास्पबेरी पाई होता है, इनमें हम चलाना चाहें तो ऑर्डिनो आईडी में हम ये कोड सेम कॉपी पेस्ट करके चला सकते हैं क्या? नहीं सेम कोड नहीं, आर्डिनो लाइक अलग लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसकी लैंग्वेज अपनी खुद की होती है जो सी से काफ़ी सिमिलर होती है, तो उसमें तुम्हें फिर कोड पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा, लेकिन कोड का लॉजिक सेम रहेगा। लाइक पीआईडी कंट्रोल अगर तुम उसमें लगा रहे हो तो वो लॉजिक सेम रहेगा, उसमें एरर वगैरह कैलकुलेशन सब सेम रहेंगी, बस थोड़ा सा फॉर्मेट सिंटैक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। हाँ लाइक अगर लैंग्वेज से तुम ऐसे डरा मत करो, ऐसे नए नए हो तुम तो शायद तुम्हें इतना आइडिया नहीं होगा, कुछ लोग ऐसे 11th-12th में C++ और पाइथन पढ़ के आए होंगे, कुछ नहीं पढ़ के आए होंगे, लेकिन ईजी होता है और तुम एक लैंग्वेज अच्छे से कर लोगे
तो फिर मल्टीपल लैंग्वेजेस पे स्विच करना, लाइक अगर तुम्हें पाइथन अच्छे से आती है तो C++ यूज़ करना इज़ नॉट दैट हार्ड, या फिर C++ आती है तो फिर तो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस करना इज़ नॉट दैट हार्ड। तो वो लैंग्वेज लाइक एज मल्टीपल लैंग्वेजेस से तुम डरा मत करो, बस एक में किसी में प्रोफिशिएंट हो जाओ, फिर स्विच करने में मुश्किल से 15-20 मिनट, आधा घंटा एक ट्यूटोरियल देखोगे सिंटेक्स का, तुम्हें एटलीस्ट बेसिक लैंग्वेज तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो लाइक ये वर्कशॉप लाइक कोडिंग से रिलेटेड तो बिल्कुल ही नहीं है। लाइक सिमुलेशन में हमें कैसे फंक्शंस कॉल करके उनमें वैल्यूज असाइन करके उसमें कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, लाइक वही सब है ना? हाँ, रोबोटिक्स वर्कशॉप है, कोडिंग तो बस एक जरिया है ठीक है, ठीक। उसे काम करवाने का। थैंक यू सो मच। या प्रतीक? भैया मैं पूछ रहा था कि मतलब ये सॉलिड्स जो हैं इनके मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के मतलब कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कुछ बुक्स आप बता सकते हैं तो? ऑब्वियसली बेसिक से स्टार्ट कहाँ से करें? लाइक तुझे थोड़ा बहुत ऐसे मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है तो रोबोटिक्स क्लब यूजुअली ऑर्गेनाइजेज अ समर कैंप एवरी ईयर, so it will also be organized for you in summers when you will have your summer break, but if you want to do it now you can just visit our GitHub repo. We'll share the link in the Telegram group and you can refer to that to know basics about coordinates, Euler angles, orientations and URDFs and like basic mechanics of robots. भैया वो आप शेयर कर देंगे ना टेलीग्राम या मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिस्कॉर्ड में? हाँ हाँ बिल्कुल। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कौन सी ब्रांच में है तू प्रतीक? मैकेनिकल में हूँ मैं, इसीलिए बोल रहा। ओके, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स से पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तुझे? हाँ हाँ। ओके, लाइक अभी हमारे पास ऐसे सच रिसोर्सेज एग्जैक्टली नहीं होंगे, लेकिन कुछ रिसोर्सेज हमें मिलेंगे तो फिर हम शेयर कर देंगे तेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। लाइक बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी हाई लेवल रोबोट्स पे ज़्यादा काम होती है। अब बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स तो तुम ऐसे करके ही सीखोगे जब कोई हार्डवेयर बेस्ड इवेंट होगा, तो उसमें तुम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स यूज़ करना, आर्डिनो यूज़ करना, ये सब तो लाइक एक्सपेरिमेंटली ही सीखा जाता है मोस्टली। ऐसे सिर्फ लेक्चर्स देख के, वीडियोस देख के या बुक्स पढ़ के नहीं सीख पाएगा तू, जब तक तू खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो होपफुली अगर ऑफलाइन मिलते हैं तो एक हार्डवेयर इवेंट करवा के विल गिव यू दैट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन दैट। एंड इफ यू लाइक वांट टू गो डीपर इनटू द इलेक्ट्रॉनिक स्टफ then it's all about like transmission and like there's a lot of stuff, so we'll share the resources, we'll find them and we'll share them with you. ओके भैया। या आर्यमन? हाँ भैया, मैं ये पूछना था कि आपके पास कोई डिसेंट ट्यूटोरियल्स है क्या यूट्यूब पे? ये मतलब कि अगर और हमें लर्न करना है इसके बारे में, या थोड़ा जो डाउट्स अगर हम लोग को जनरेट हुए तो वो किससे पूछे, या कोई स्टैक एक्सचेंज कुछ ऐसे कुछ है क्या इसके लिए? ये सब PyBullet में नहीं, मतलब कि ये जो सिंटैक्स नए नए हैं कुछ टाइप्स, तो अगर उसमें कोई डाउट्स आए तो वो सब कहाँ से, कोई ट्यूटोरियल्स टाइप है क्या? एक PyBullet की क्विक स्टार्टर गाइड है, वो हम तेरे साथ शेयर कर देंगे, तो कमांड्स में कुछ डाउट आएगा तो यू कैन रेफर टू दैट। पाइथन के डाउट्स कुछ आते हैं वो तो तुझे फिर स्टैक ओवरफ्लो एंड ऑल पे सब रिसोर्सेज बहुत होते हैं, जस्ट डाउट अपना एरर सर्च मारना एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज। एंड अगर तुझे ऐसे PyBullet अच्छे से और सीखना तो वी कंडक्टेड वर्कशॉप्स इन NTU सिंगापुर robotics club, so we have those videos on our YouTube channel, you can go and refer them. ओके ओके, यूट्यूब चैनल का नेम क्या है भैया? Robotics Club IIT BHU. ओके, थैंक यू। Any more doubts? भैया मैंने सुना था कि मतलब रोबोटिक्स में करने के लिए अच्छा वो एडवांस जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना पड़ता है, तो वो सही है क्या? वो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, लाइक रोबोटिक्स इज दिस इज फॉर एवरीवन, लाइक कल्मिनेशन ऑफ लॉट ऑफ फील्ड्स, सो robotics is the only place where you'll find algorithms also, where you'll find coding also, where you'll find mechanics also, where you'll find electronics also, where you'll find AI ML also, so everything just combines to give rise to robotics. So yeah, like एक coordinate system and all ज़रूरी होता है, वो तुम्हें इस इवेंट के लिए ज़रूरी नहीं चाहिए होगा, and it's usually like on advanced, if you go into like work on advanced robotics then it is required. Like most of the people your second year rights won't know about this complicated transformation matrices and DS parameters and coordinate systems, etc etc, and still they work very well in robotics, so it's not a necessity. If it's just if you want to work on Yeah, I mechanical want. part of the robots, then you will need to know that. ओके। भैया
हाँ नहीं, जब अपन हार्डवेयर पे करेंगे तो ये ऑर्डिनो में कोड करेंगे, मतलब ऑर्डिनो में करेंगे या फिर क्या होगा वो? हाँ और हार्डवेयर पे काम करेंगे? मतलब हार्डवेयर पे भी काम करोगे, आर्डिनो में कोड भी करना होगा, आर्डिनो यूज़ कर सकते हो, रास्पबेरी पाई होता है, और भी अलग अलग आते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स। तो अपन किस पे काम कर रहे होंगे, पीवाई बुलेट के ये सारे? नहीं, इसके सहारे तो किसी पे नहीं कर रहे होगे, ये सिमुलेशन टूल है, इसके अंदर जो तुम लॉजिक सीखोगे फिर वही तुम लॉजिक उसके ऊपर लगा सकोगे। मतलब तुम डायरेक्टली इसका कोड यूज़ नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो एट द एंड अपन आर्डिनो या फिर रास्पबेरी पाई इसमें ही करेंगे, बट अभी लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, अगर हार्डवेयर में तो फिर बेसिकली शायद वो यूज़ होगा। ये लॉजिक गेम तो सिर्फ ऑनलाइन अभी चल रहा है बस इसीलिए ना, नहीं तो हम लोग रोबोट्स बिल्ड कर रहे होते हैं अभी, ऐसा थोड़ा मतलब ऑर्डिनो बेसिक स्टार्ट करते। ज़रूर, मतलब पहला इवेंट शायद ऑफलाइन ही होता था, हमारा भी ऑनलाइन हुआ है। अच्छा, ये कंपटीशन के लिए हमारे लिए वर्कशॉप्स हो रही है ना, कि लाइक हम टीम्स में बने हैं तो फिर कंपटीशन होगा 18-19 फेब। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। लाइक अभी जनरली बाकी जब फर्स्ट इवेंट होता था हमारा तो ऑनलाइन ऑनलाइन होता था, ऑफलाइन नहीं होता था, क्योंकि सब साथ में बैठ के आर्डिनो पे काम कर रहे होते थे एंड टीम्स होती थी, बट ऑनलाइन की वजह से हमने शिफ्ट कर रखा है अभी। जो ध्रुव ने तुम्हें से लाइन फॉलोअर दिखाया अपनी स्लाइड में लास्ट में, तो हमारा पहला कंपटीशन उसी पे होता था हमारे टाइम पे, उसका नाम था रोबोटा, एंड वी हैड टू बिल्ड दैट लाइन फॉलोअर, एंड देन everybody used to go one by one, run their car on the track, and who used to do it in the like fastest, he used to win. So then we used to work in like teams of 4 and 5 and make our bots and code Arduino, etc., etc. But this is not to undermine the importance of simulation. So simulation is a very important tool for robotics. We are not teaching you just to build your logic. Ki once you go into offline and you work on robots and you forget about simulation, ki simulation was just for the online. So it's not like that. Simulation exists because they are very important tools. Say if you're working on very expensive robots, there are humanoid robots and drones, etc., etc., that are very expensive, say in crores and lakhs. So you can't test your algorithms directly on the hardware, because then there is a chance your hardware will get damaged. There's a chance that your robots might break, and it will be very very expensive to fix them. So that's why simulations are there. Simulations are kind of a you know copy of real world inside your computer. So you try to run your algorithms and design your robots inside simulation, and if they are working inside simulation, there is a good chance they'll work on hardware. So simulation is used for testing. So first phase of any robotic project, it starts from a simulation. If your simulation is working, then only we proceed with the hardware. This is for more complicated robots. Like if you're making a line follower, you can directly go with the hardware because there is not much testing involved. There is no expensive stuff involved. But for most expensive projects and most professional projects, first they start with the simulation. They run their algorithms, they test. Say you want to make a quadruped walk or robot with 4 legs, then you'll test it first on your simulation. Then your simulation will give you the values, how much torque you need, which motors will be required, how much frequency will be required, etc., etc. And based on that, you start building your hardware. And if your simulation is working good, then you try to transfer your results from simulation into the hardware. So that is a basic timeline of your or good robotics project. So that's why simulation forms a very important role. And you go anywhere in the world, you want to build a career in robotics or you want to do projects on robotics, simulation, having the knowledge of simulation will help you anywhere and everywhere. And that's why we are teaching you this. This is not just a tool to test your logic and just forget about it once you go offline. This is something important and something significant, and that's why we are teaching you this. Yeah, ये लाइक Shruti. इस सिमुलेशन Yeah, का yeah, go ahead. कार वाला जो आपने बनाया है, इस सिमुलेशन का जो मेन फ्रेमवर्क है कि इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, फंक्शंस आपने कॉल करके ऑलरेडी वो एक सेटअप करके रखा था, कुछ कोड सा, वो समझ तो नहीं है, पर जब अगर हम खुद से कुछ सिमुलेशन बनाएंगे तो हमें ये सब आना चाहिए ना, कैसे कॉल करना है और कैसे कैसे उसका सीक्वेंस होगा, तो वो हाँ, तो वो like थोड़ी quick start guide will share with you. There is something in that, and the functions are self-explanatory. We have like Adesh did a good job of explaining all the functions, and they're also very self-explanatory. So we'll share those files with you. You can see them, you can play with them, and you'll know how to interact with the simulation. एंड अब वो
जो प्री रिटन जो कोड मतलब फ्रेमवर्क है वो आप हमें प्रोवाइड करोगे, मतलब कॉपी पेस्ट हम करके यूज कर सकते हैं ना? हाँ, of ठीक course. ठीक है, थैंक यू। Yep, like one thing I would like to add in that starter guide, it's like very well self-defined. It has all the input parameters and what that function do and what is the data type it returns. So it's like quite good. You can go through it. मतलब बेसिकली हमने भी वहीं से सीखा है, हाँ मोस्टली उधर से सीखा है। मोस्टली उधर से सीखा है, तो इट इज नाइस। We have doubts, Shruti. You can Yes, unmute. भैया। Hello, am I audible? Yep. यस। भैया मुझे पूछना था, लाइक अभी तो मुझे लाइक रोबोटिक्स के बेसिक्स भी नहीं आते, एंड नाउ वी आर गोना हैव अ कंपटीशन, सो हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर दैट? वर्कशॉप अटेंड करो। Like Okay, then workshops, just we are starting from absolute basics, so मतलब yeah, follow along the workshops and I think you will get a good intuition about what you are trying to do and what the problem statement is. okay, so will we be given any questions and all to practice and test our skills? Yeah, we'll be sharing assignments which you can test. So, like whatever Dhruv and Adish presented today, like the code, you can see that. We'll upload that, as well as we'll give you some assignments which you can attempt so that you can understand more. Okay, भैया, thank you. And there are some things like simulation, differential type, PID. A lot of things are being thrown at you, and they might not be comprehensible in one go. So पहली बार जब मैंने PID पढ़ा था तो मेरे भी ऐसे सर के ऊपर से गया था क्या चीज़ है ये. I did not understand it. So it can be hard to comprehend. For that, go through the recording once again and search on Google. Try to comprehend the equations. There are very good YouTube videos on PID. So they give you, this explain with the visual examples, like just like Dhruv did. So they do that with a car or other things. So you can go through them and try to understand that too. You can see the recording and just brainstorm yourself, like how is it working, why it should work. You can discuss with your mentors also, and that way you can just bring more clarity. Yeah, moving ahead, Siddharth. So, since you talked about mentorship programs, so it is already there, or you will be creating that? So some of the, like if you have registered today, then you might not have had a mentor, but if you have already registered yesterday or something, like by tomorrow, all the teams will have their mentors and your mentors will contact you. So, but make sure you register at least, yeah. So can you please share the link in the chat? Yeah. And I have one question also. The prosthetic hand, the making of prosthetic hand also comes in robotics club. It is a different area. Like it's kind of a hybrid area between electrical and robotics. You can say like sensing the neurological signals is covered mostly in electrical engineering and biomedical engineering, I guess. So that part, like there's some people in our club also following that, this working on prosthetics and everything. But yeah, their designing and everything can come under robotics, and there are people also who have done this under robotics, who are doing research on this also. Okay, thank you. Yeah, Pratik, do you have any more doubts? या आई हैव अ डाउट भैया कि ये जो आप जो प्रॉम्प्ट विंडो था इसमें जो कोड लिखा था लिखा गया था उधर, उसके बाद हम मतलब जो भी फाइल वहां पे ऐसे लिख देंगे उसका पाथ और वो हो जाएगा। हाँ, बस उसका पाथ लिख के तुम रन करना, वो चल जाएगा। लेकिन वो जो आदिश भैया ने जो लिखा था वो तो किसी और एडिटर में लिखा था शायद। हाँ एक्चुअली मैं VS कोड आईडी यूज कर रहा हूँ, सो उसमें एक कमांड होता है रन का, तो उसे जब क्लिक करता है तो रन कर जाता है। लाइक ये कोई सी भी आईडी यूज कर सकते हो, पाइचार्म भी है वो भी यूज कर सकते हो, सबलाइम भी तो है। फिर ये करने का क्या मतलब रहा फिर?
लाइक अगर किसी एक प्रोग्राम को रन करना है तो काफ़ी तरीके होते हैं. सो वन ऑफ देम इज टर्मिनल, बट इट्स क्वाइट लॉन्ग कि पहले पूरा कमांड लिखो देन प्रेस एंटर. सो इसलिए आईडी डाउनलोड करते हैं और आईडी के भी काफ़ी फंक्शंस होते हैं. तो इसलिए मोस्टली लोग कोडिंग करते टाइम काफ़ी आईडीज डाउनलोड कर लेते हैं. सो आई यूज़ मतलब VS कोड. हाँ, तो इसमें मतलब ये मतलब जो जिसमें भी एडिटर में करें या जो जिसमें भी करें, ये होना चाहिए जो इंस्टॉल किया है हमने वो होना चाहिए. हाँ, जैसे पाइबुलेट ओपन सी भी तुमने इंस्टॉल करा होगा तो वो होना चाहिए वो. लाइक वो सिस्टम इंस्टॉल्ड है एंड ये जो एडिटर होते हैं आईडीज इनमें से अपन कोड लिखते हैं. हाँ. और वो किससे मतलब उससे कनेक्ट कैसे होता है? वो हो जाता है ऑटोमेटिक. बस आपको जो इंस्टॉलेशन गाइड होती है फॉलो करनी होती है. हाँ, इंस्टॉल जैसे VS कोड का बेसिकली होता है. तुम इंस्टॉल करोगे, उसके अंदर एक पाइथन का इंटरप्रेटर होता है, वो तुम इंस्टॉल करोगे. मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, तुम बस लिख देना कि VS कोड इंस्टॉलेशन फॉर पाइथन, तो वो पूरा प्रॉपर गाइड आ जाएगा. और जो तुमने एनवायरनमेंट अभी पूरा सेटअप करा है, वो डिटो का डिटो एनवायरनमेंट तुम इसके अंदर मतलब कर सकते हो. मतलब वो तुम्हारा इंटरप्रेटर है. तो लाइक मतलब इसको इसके अंदर एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसे बता सकता हूँ कि जैसे जो तुम्हारा टर्मिनल होता है तो वो सेम टर्मिनल VS कोड में भी होता है. तो जैसे अब अगर मैं एक बटन को असाइन कर दूंगा कि अगर मैं उस बटन को दबाऊँ तो टर्मिनल पे वो जो एग्जैक्ट तुमने लाइन जो अपने टर्मिनल पे लिखी थी वो रन करके एग्जीक्यूट हो जाएगी और तुम्हारा वही सेम विंडो आ जाएगा. लाइक ये आईडीज करते हैं. तो मतलब VS कोड में बस इंपोर्ट करना रहेगा पाइबुलेट, या मतलब ये इंस्टॉल नहीं नहीं करने का नहीं, बाद? VS कोड इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर. सिस्टम में ऑलरेडी सब इंस्टॉल्ड हो रखे हैं तुम्हारे. सिर्फ इंपोर्ट करना बचेगा. इंस्टॉल दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. लाइक जो ओके. तुम टर्मिनल अपने सिस्टम में यूज कर रहे हो वो सेम टर्मिनल VS कोड पे भी है. तो तुम चाहो तो उस टर्मिनल पे भी लिख सकते हो. बट उस टर्मिनल पे लिखने की वजह लोग वो जो रन का बटन है मोस्टली उसी क्लिक करते हैं. सो उससे वो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है. क्या भैया? We have some more doubts, I guess. Ruchira. My doubt is that can I run it in ideally or it will work only in VS Code? You can write in any ID you want. Like it's your preference. All right. Yeah, so Siddharth, do you have any other doubts? Sorry, I forgot to put the hand. Sorry. Oh, no problem. Okay, perfect. ये प्रतीक मिश्रा. Yes, प्रतीक. अब भैया वो जो प्रॉम्प्ट में अगर हम पाथ लिखें तो वो फाइल .py में सेव होना चाहिए ना, बाकी किसमें भी नहीं होना चाहिए एक्सटेंशन? लाइक डिपेंड करता है. अगर आप पाइथन की फाइल रन कर रहे हो तो .py एक्सटेंशन होना चाहिए. अगर C++ की कर रहे हो तो .cpp हाँ, होना नहीं चाहिए. पाइथन के लिए. हाँ, और पाइथन के .py. .py. ओके. तो ये गूगल कोलैब में भी हो सकता है? गूगल कोलैब के अंदर ट्राई नहीं करा बेसिकली. गूगल कोलैब में कर सकते हो. उसमें उसके भी. अंदर हाँ, ध्रुव कंटिन्यू. उसके अंदर शायद क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि आप तब एक एक्सटर्नल सर्वर पर रन कर रहे हो तो आपको लाइव सिमुलेशन पता नहीं दिखाई दे या ना दे. मतलब लाइक क्योंकि नॉर्मल पाइथन फाइल तो एग्जीक्यूट कर जाएगी. हाँ, नॉर्मल पाइथन फाइल रन कर सकते हो. पाइबुलेट की जैसे सिमुलेशन विंडो इसके अंदर आपके स्क्रीन के ऊपर आएगी तो तब हो सकता है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए कि वो नहीं शो कर रहा, क्योंकि जनरली वो सब आउटपुट शो करता है गूगल कोलैब पे. ट्राई करके भैया देख लेंगे फिर बता देंगे. हाँ. नहीं, भैया कोलैब वो पे लाइक फॉर्म ऐसे पाइपलाइन डायरेक्टली नहीं चल पाएगा बिकॉज एक एक्स्ट्रा विंडो खुल रही है. तो जो सर्वर्स लाइक कोलैब इज लाइक अ सर्वर विच यू आर यूजिंग, तो दे डोंट अलाउ टू open any additional window. So if you try to run any OpenCV pipelet this stuff on collab, it won't run. So better to do this on locally. Yeah, Siddharth. भैया भैया वो गूगल फॉर्म भर चुके थे हम पहले ही, लेकिन मेंटर्स ग्रुप में हम है नहीं वैसे. कल तक मेंटर मतलब कल तक ग्रुप फॉर्म हो जाएगा अगर अभी तक नहीं हुआ तो. अभी तक नहीं हुआ तो हाँ कल तक हो जाएगा सब. या पार्थ.
हाँ भैया, वो विजुअल कोड में हम लोग को पहले सेलेक्ट इंटरप्रेटर्स में जाना पड़ेगा ना, लाइक वो जो कल इन्वायरमेंट क्रिएट करना था, किया था, उसको सेलेक्ट करने के लिए। हाँ बिल्कुल, सिलेक्ट इंटरप्रेटर में करके वाला एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लेना तो चल जाएगा कोड। बट उसमें मतलब मैं ये किया, उसमें कुछ तो एरर आ रहा है, मतलब कुछ तो कंट्रोल दबाने के लिए बोल रहा है, अब सिमुलेटर आ ही नहीं रहा। अच्छा, तुम्हें मेंटल आउट हो गए क्या? हाँ शायद से आप भी हैं। अच्छा ध्रुव ठीक है, भैया। तो फिर ठीक है, तुम मेरे से बात कर लेना, हम अभी या तो मीट या पे। तो उनको डीएम कर दो या हम दोनों में से एक को डीएम कर दो। हाँ लाइक हम एरर का एसेस तो हम देख लेंगे। ओके भैया, थैंक यू। भैया ग्रुप अनंत का लिंक किस में आता है, ईमेल पे आता है क्या? मेंटर ग्रुप का, हाँ मेंटर तुम्हें मेंटर ऐड कर लेगा ग्रुप में। मेंटर ऐड कर टेलीग्राम ग्रुप पे होना तुम लोग, जो जहाँ पे सब लोग हैं वहाँ पे होना। हाँ भैया है। हाँ बस ठीक है। और एक मेंटर ग्रुप अलग से बनेगा व्हाट्सएप पे, वो मेंटर तुम्हें ऐड कर देगा। तुम टेलीग्राम ग्रुप भी यूज कर सकते हो डाउट पूछने के लिए, मतलब उससे दोस्तों के भी सेम डाउट होंगे तो क्लियर हो जाएंगे, तो यू हाँ कैन डू दैट, विल पिन द इम्पोर्टेंट डाउट्स एंड द सॉल्यूशंस। या अनंत, हाँ भैया, वो मैं सिमुलेटर खुल जा रहा है मेरा, लेकिन नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जा रहा है बार बार। ये स्पेसिफिक डाउट्स के लिए थोड़ा मेंटर्स को कांटेक्ट करना है या ग्रुप पे बात करते हैं। अच्छा ओके ओके, तो तुम अपने मेंटर्स को कांटेक्ट कर लेना एंड लाइक ग्रुप पे पूछ लेना जो स्पेसिफिक डाउट्स हैं, विल सॉल्व देम देयर। ओके भैया, हेलो भैया। यस। तो भैया जैसे मैं आईटी पाइचार्म यूज़ करता था, मतलब पाइथन के लिए, तो क्या मुझे फिर भी पाइबुलेट इंस्टॉल करना पड़ेगा एनाकोंडा से, या फिर बस इंपोर्ट करने से वो हो जाएगा? तुम्हें इंस्टॉल तो करना पड़ेगा ही। अब तुम उसको एनाकोंडा से करना चाहते हो, तुम्हारी विश है, मतलब अगर तुम डायरेक्टली पाइचार्म में भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो तो, पर हाँ मतलब इंस्टॉल तो करना पड़ेगा एनीवे। अच्छा ओके। जैसे पाइथन, तुम्हें पाइचार्म के अंदर अगर तुम देखा होगा तो उधर सेटिंग्स के अंदर तुम ऐड कर सकते हो लाइब्रेरीज, तो उसके अंदर पाइबुलेट मिल जाएगा। ओके भैया, थैंक यू। या प्रतीक, जैसे भैया हमने एनाकोंडा से इंस्टॉल कर लिया, लेकिन पाइचार्म में इंस्टॉल नहीं किया, तो फिर भी इंपोर्ट कर सकते हैं कि अलग से वहां पे इंस्टॉल करना पड़ेगा? नहीं नहीं, कर सकते हो, और उसके अंदर बस इंटरप्रेटर, मतलब तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा वो वाला एनवायरनमेंट जो तुमने कॉन्डा में बनाया है एनाकोंडा ओके, में। तो एनवायरनमेंट वही ब्लैक वाला रहेगा ना, प्रॉम्प्ट वाला? हाँ वो मतलब हाँ, वो तुमने एक एनवायरनमेंट अलग से उसमें बनाया है, तो वो वाला एनवायरनमेंट तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा पाइथन के अंदर। ओके। या आदित्य। भैया, मैंने अभी तक कोई टीम नहीं बनाई है, मैं अभी रजिस्टर नहीं किया हूँ, तो मैं सिंगल अभी रजिस्टर कर सकता हूँ क्या, फिर बाद में टीम कोई बना? हाँ तो सिंगल कर ले, अगर ऐसे और लोगों ने भी सिंगल करा है तो हम साथ में ग्रुप कर देंगे तुम्हें, ताकि तुम टीम में काम कर सको, एक बंदे पे ज़्यादा लोड ना आए। तो रजिस्टर कर ले सिंगल, विल अलर्ट योर टीम, डोंट वरी। ओके, थैंक यू। Okay, I guess we can wrap it up now. It's been over an hour. So, yeah, it was a great session by Dhruv and Adish. Thank you, both of you, for a great workshop. And for the juniors, feel free to ask your doubts to the mentors and keep learning new stuff. Keep Googling and keep searching for stuff and just take part actively. And we'll see in the event how यस, everyone of you एंड performs. गूगल करना अच्छे से सीखो, मतलब लाइक गूगल, कोई सा भी डाउट है सीधा गूगल करो, मतलब ढूंढो। लाइक मोस्टली डाउट्स गूगल पे मिल जाते हैं, हाँ स्टैक मतलब ओवरफ्लो, उन सब पे। थैंक यू भैया। So, okay then, yeah, see you all in the next workshop. Stay tuned for more. And meanwhile, just keep learning. Thank you for attending. You all may leave now.